Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, welcome back to your math classes. I'm your mathematics educator again here with a new chapter and a new concept. And today we have chapter number 13, which is symmetry and pattern. So, let's take a warm up first. The children of class 5th were very excited. They were going to visit Agra to see the beautiful historical buildings. They saw Red Fort and other buildings in Agra, but the Taj Mahal was the most attractive. It is beautiful because it is made of white marbles and shines in the full moonlight, commented Julie. But its fourfold symmetry increased its beauty so many times, said the naughty Diana. The teacher smiled and said, beauty lies in symmetry. We find symmetrical patterns in buildings, on clothes, in every creation of human and nature. Do we have any other symmetrical building except Taj Mahal? Asked Julie. Yes, there are many. For example, Char Minar, Hyderabad, Char Minar in Hyderabad, etc., replied the teacher. Now, what does mean by symmetry? If we divide a shape into two equal parts by a line, the shape is in symmetry on both sides of the line. The shape it's called symmetric, the line is called the line of symmetry. यानी कि यहाँ पर हमने ये मतलब समझा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं तो वो हमारी एक सिमेट्री है. जो लाइन उसे डिवाइड कर रही है दैट इज योर सिमेट्रिकल लाइन, और जो फिगर डिवाइड हो रहा है दैट इज योर सिमेट्रिक figure. For example, this butterfly can be classified into two equal parts by using this straight vertical line, and then you can say that okay fine, this butterfly is a symmetric and this is your symmetrical line. Okay, now only two equal parts inside does not give symmetry. To be symmetric, the details, color scheme, etc. within the two parts must be the same. इट मीन्स कि आप इस तरीके से उसे डिवाइड करें कि जब आप उसे फोल्ड करें तो वो लगे कि वो उसी का ही हिस्सा है, इतने सेम होना चाहिए. अगर हम बटरफ्लाई में जब मैंने इसे वर्टिकली डिवाइड करा तो मैं देख रही हूँ कि सारे पोर्शन लिटरली यहाँ पर सेम है, तो ये हमारा सिमेट्रिक का मतलब होता है. 3D shapes can also be divided into two equal parts across a line in the middle. Such a shape is said to be symmetric. The dividing line is called the line of symmetry. For example, we can see a butterfly flying in the air. See figure. If we divide the butterfly into two parts by line, both parts are exactly equal to each other. When a butterfly folds its wings, it looks like its equal half. Thus, the body of a butterfly its symmetry. यानी कि सिमेट्री का मतलब जनरली हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि जब भी हम उसे एक लाइन की हेल्प से ब्रेक डाउन करेंगे इनटू टू इक्वल पार्ट्स तो एग्जैक्ट होने चाहिए, सारी की सारी चीजें सेम होनी चाहिए. बस हम ये नहीं कहेंगे कि वो दोनों एक मतलब बस इक्वल हों, बाकी सब चीजें भी उनमें सिमिलर होनी चाहिए. नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव दिस जीन्स, अगर मैं इसे क्लासीफाई करती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ वर्टिकल लाइन, तो व्हाट कैन आई ऑब्जर्व हियर कि ये एग्जैक्ट इसका हाफ है. इन दिन चेयर वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इट. Some articles in the house which can be folded into two equal halves matching each other are known to be symmetrical. For example, jeans, pictures of some articles like spectacles, simple chair can also be folded into two equal halves. Therefore, they are also symmetrical. Now we are going to learn about the reflection. Reflection तो बच्चों आपने सुना होगा कि तेरा reflection आ रहा है मिरर में, राइट? ये जनरली हम वर्ड्स यूज करते हैं. रिफ्लेक्शन का मतलब कि जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो जो इमेज हमें देखने को मिलती है दैट इज योर रिफ्लेक्शन. ओके, now understand in deep. We can see the image of our face in the mirror. The face in the mirror is not real. It is the reflection. In reflection, the image has left-right changes because of lateral inversion. That is the image of the near side. It's closer to the surface of the mirror, and the image of the far side is farther from the mirror. The two equal parts of symmetrical objects are reflection images of each other. If we place a mirror on the line of symmetric, then the image of one side of the shape will be fold exactly on the other side of the shapes. तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं. क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब इमेज हमारे सामने आएगी जो हम मिरर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक्जैक्टली टू कॉपी होगी. अगर हम अपने आप को मिरर में भी देखते हैं तो हमारी जो फेस होगा वो एक्जैक्टली सेम होगा, बट वहाँ पर एक स्लाइटली चेंज हमें देखने को क्या मिल जाता है कि जो हमारा राइट हैंड साइड है वो रिप्रेजेंट होता है मिरर में लेफ्ट हैंड साइड ड्यू टू द लेटरल इन्वर्जन, और जो राइट होता है वो लेफ्ट रिप्रेजेंट होता है. अदरवाइज अगर जैसे मेरी आंखें हैं वो वैसे की वैसी मेंशन होंगी, कुछ बड़ी नहीं हो जाएंगी. नोज है वो भी वैसे की वैसी होगी, बड़ी नहीं हो जाएगी. सो दैट इज योर रिफ्लेक्शन सिमेट्री. फॉर एग्जाम्पल हियर यू सी बी, तो लेफ्ट और राइट हुआ है, बट अगर आप जब इसे एक दूसरे के ऊपर रखोगे प्लेस करोगे तो व्हाट यू ऑब्जर्व कि वो एकदम टू कॉपी है. फॉर टू, फॉर फोर एंड फॉर दिस हार्ट.
सो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं, कि कितनी लाइन यूज करूं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो वो मेरा है वो सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाए इनटू डिफरेंट पार्ट्स. We know the number of lines of symmetry in a square, rectangle, equilateral triangle, isosceles triangle and circle. So square we have 4 lines of symmetry, in rectangle 2 lines of symmetry, equilateral triangle 3 lines of symmetry, isosceles triangle only 1 line of symmetry and circle we have infinite lines of symmetry. आप ये कैसे क्लासिफाई कर सकते हो कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है? तो आपको सिंपली ये देखना है कि रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए. रेगुलर पॉलीगन का बच्चों मतलब आई होप सो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है इक्वल साइड्स हो, इक्वल एंगल्स हो. ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो इक्वल साइड्स हैं, इक्वल एंगल्स हैं. कितनी साइड्स हैं? इक्वल 4, तो इसलिए उसकी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है. रेक्टेंगल में सिर्फ 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर विच आर अपोजिट टू ईच अदर, राइट? सो दैट्स व्हाई 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री. इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, सो दैट्स व्हाई 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री. आइसोसेलेस ट्रायंगल में ओनली 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड सर्कल में तो कोई एंगल और साइड का कोई केस ही नहीं है, तो इसलिए इनफिनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री वी हैव. टू क्रिएट सिमेट्रिकल patterns, fold a rectangle sheet of paper into 2 equal parts, punch a hole and then open the fold. We see 2 holes equidistant from the fold. So what we observe there, कैसे हम कर सकते हैं कि हमने एक पेपर लिया, उसे फोल्ड करा और बीच में पंच करा एक होल, और जब हमने उसे ओपन करा तो दोनों साइड पर हमें वो होल मेंशन हुआ. To draw symmetrical figure along with the line of symmetry. Now how can we make along with the line? So we draw the mirror image of the given half part of the picture. It is important to make the size of the line segment and angles between them are same. For example, this is a half triangle, so we can complete it. This is, so we just have to make a mirror image of the part. Now we have our exercise 13a. Which of the following objects are symmetrical? Put a mark. So if it could be, so we can put a mark, but in this case we cannot say that, so we just cross it. So now you have to classify that rest of the figures, is it is a symmetrical figure or not. Is the dotted line a line of symmetry? Answer yes or no. तो हम कैसे क्लासीफाई करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री कि जिनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो. सो इन दिस सेक्शन ये थोड़ा सा लाइकली चेंज होगा, बट वी कैन से दैट yes it is a line of symmetry. For cup, yes it is a line of symmetry. For rest of the 2 you have to tell me. No, in this case it is not a line of symmetry just because of it. Okay, in this, no. Okay, so you have to tell. Now how many lines of symmetry are there in each part? So this is your some kind of cylindrical shape, so only 1, no, 2 could be here. We can classify it like this. Now in this 1 same and 2, in this only we have 1. So in this case you can write your answer for rest of the figures you have here. Write the number of lines of symmetry for each flag. So this is rectangle, so we already know 2 line of symmetry. This is again rectangle, 2 line of symmetry. Okay, complete the following figures so that the dotted line is the line of symmetry. So you have to complete this figure. This is your completion. Okay, next you can do the rest of the do it yourself. आप ये बाकी ये पार्ट ई की जो बाकी के फिगर्स है वो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं सिमिलरली जैसे कि मैंने किया है. नाउ डिफरेंट व्यूज ऑफ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स. डिफरेंट एक्शंस ऑफ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस डिफरेंट व्यूज. देयर आर 3 वेज वी कैन मूव अ फिगर. सो अगर यहाँ पर देखें कि हमें डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं हमारे सिमेट्रिक फिगर को देखने के लिए. 1, दोनों L फ्रॉम ईच साइड, दिस एंड दिस. ये लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, यहाँ पर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर. यहाँ पर फेसिंग हमारी एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है, तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स देखे. नाउ स्लाइड, फ्लिप एंड टर्न means move a figure in one direction, means to move a figure over a line and it now faces the opposite direction, means to rotate figure turn through an angle. So next we have rotational symmetry. जब हम किसी फिगर को मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, तब भी वो सिमिलर होगा या नहीं होगा, अब हम ये देखेंगे. ठीक है, rotation is turning of an object about a fixed point called the center of rotation. For example, अगर यहाँ पर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो फिक्स पॉइंट पर करेंगे. 90 डिग्री का मूवमेंट है, फिर नेक्स्ट भी 90 डिग्री का मूवमेंट होगा, और भी मूवमेंट्स करने हो और भी रोटेशन करने तो वो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग होंगे. तो
फिक्स पॉइंट पर कॉल द सेंटर ऑफ रोटेशन. फॉर एग्जाम्पल द सेंटर ऑफ क्लॉक फेस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द हैंड्स. द सेम अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर टर्निंग थ्रू एन एंगल, इट्स कॉल्ड द रोटेशनल सिमेट्री. यानी कि जब हम उसे रोटेट कर रहे हैं और रोटेट करते करते जो उसकी इनिशियल पॉइंट था, जैसा वो इनिशियल उसमें दिख रहा था. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लॉक का एग्जाम्पल लूँ, हमारी क्लॉक 12 से स्टार्ट होती है टाइमिंग हमारी रिप्रेजेंटिंग, और 12 पर ही एंड होता है. तो जहां से स्टार्ट हुआ वही इनिशियल पॉइंट पर आ गए, तो वो हमारा क्या होगा, ये हमारी रोटेशनल सिमेट्री होगी. हाउएवर व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इट्स शेप एंड साइज डू नॉट चेंज. Usually a two-dimensional shapes look like the same after a full turn or complete rotation. Some shapes do not the same after a quarter turn, half and three-quarter turn. कुछ कुछ हमारे फिगर्स होते हैं जो कि सेम लगते हैं आफ्टर रोटेशन और कुछ कुछ नहीं लगते हैं. जनरली जो हमारे 2D शेप्स हैं वो एक फुल टर्न के बाद एज इट इज ही दिखते हैं. ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है 1/4 टर्न, देन हाफ टर्न एंड देन 3/4 टर्न. सो 3/4 टर्न पर भी ये सेम नहीं हुआ है. ठीक है. Some shapes will look the same even on a 1/4 turn, like a fan moving 4 blades. Some shapes will look the same even on a 1/3 turn, like a fan having 3 blades. Some shapes will the same on a half turn, like a fan having 4 blades. Okay. Now we have quarter turn. Quarter means 1/4 turn. So the design is formed on the floor of the Taj Mahal in Agra. So this is the design we have. The basic design has been turned 1/4 or quarter turn. So this is 1/4 turn of this design. There are some special shapes that look the same even we give them a quarter turn. For example, this one as it is, this one as it is. Now we have half turn. Some shapes look the same even after a half turn. आप बच्चों से कैसे समझोगे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ना अपने पास ले लेना, अपने ज्योमेट्री बॉक्स ले लेना या फिर कोई बॉटल ले लेना और फिर उसे 1/4 टर्न करके देखना है. तो जैसे जैसे अगर आपने 1/4 टर्न उसका करा तो इसका मतलब सेम फिगर आया तो वो सिमेट्रिकल रोटेशनल सिमेट्री उसमें है. हाफ टर्न करा सेम आया तो इसका मतलब उसमें रोटेशनल सिमेट्री हमारी है. क्वार्टर टर्न्स डज नॉट लुक द सेम, इट मीन्स कि ये हमारी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. हाफ टर्न्स लुक द सेम, इट मीन्स कि यहाँ पर हमारी रोटेशनल सिमेट्री है. 1/3 टर्न यानी कि अब हमें 1/3 मूव करना है. दिस इज द हब कैप ऑफ अ कार व्हील. इट विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 क्योंकि सर्कल है. सर्कल में तो हम किसी तरीके से भी मूवमेंट करेंगे रोटेशन करने के बाद वो हमें सेम ही दिखेगा, तो 1/3 के बाद वो एज इट इज है. नाउ 1/6 टर्न. तो दिस इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ शिप. इट विल लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न. नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज 13B. Which of these shapes will look the same after 1/4 turns? Put a टिक मार्क. तो अगर मैं इसे 1/4 मूव करती हूँ तो ये एज इट इज ही होगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि कोई दूसरा चेंज इसमें है ही नहीं. अगर मैं इस स्टार को चेंज करती हूँ तो ये भी एज इट इज ही चेंज हो जाएगा. बट उस सी पार्ट में देयर इज अ कंफ्यूजन, ये आप क्लैरिफाई करोगे कि सेम वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा आफ्टर 1/4 टर्न. विच ऑफ द शेप्स विल लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न? सो दिस वन विल look at the same as half turn. This one is no, this one C part could be. So in same way you have to put your tick according to your turns and according to your rotational symmetry. Now write 1/3 or 1/6 of a turn which will make the shapes to look the same again. This 1/3 and 1/6 both of, for 1/3 and 1/6 both this is amplified on this figure A. Now we are going to, for rest of the parts you have to tell me, is there 1/3 or 1/6 is amplified or not. Next we have patterns. Patterns का मतलब होता है कि सेम सीक्वेंस को आप बार बार रिपीट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल के सबसे पहले एक आपने ब्लू कलर लाया, फिर आपने एक पिंक कलर की लाइन ली, ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक. क्या कर रहे हो आप यहाँ पे ब्लू पिंक में, कि आप एक सेम पैटर्न को, एक सेम सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो. जब हम एक सेम डिजाइन को बार बार फॉलो करते हैं दैट इज योर पैटर्न. A pattern is an arrangement of lines, shapes or colors on a surface repeated again and again. So blue, pink, blue, pink, blue, pink. क्या करा? Again and again repeating same color. A decoration looks beautiful because of patterns. There are patterns in nature everywhere. Crystals in rocks and flowers and leaves in plants. Humans create patterns in designs on clothes, jewelry, tiles, building shapes. Movements of the shapes in a patterns may be in various ways, slides, flips and turns. Now we have tessellation. Tessellation means a pattern formed by repeating figures that fit together without gaps or overlaps is a tessellation. यानी कि आप ना यहाँ पर क्या देखोगे बच्चों की टाइल के ना वो देखना, डिजाइन देखना, तो जिन टाइल्स में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, नो गैप,
पूरे एक दूसरे से बहुत ज्यादा फिटेड होते हैं, बहुत फिक्सेड होते हैं टुगेदर टू ईच अदर, नो गैप इज देयर, so that is called your tessellation, are formed using slides, flips or turns of congruent figures. Figures that have the same size and same shapes are congruent figures. Figures that have the same shape but not necessarily the same size are called similar figures. यानी कि अगर सेम साइज और सेम शेप होगा दैट इज योर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, और सेम शेप तो है बट सेम साइज नहीं है तो दैट इज योर सिमिलर फिगर्स. Figures similarly but not congruent would not fit on one another exactly. So this is your congruent. So this can be placed tightly packed and tightly attached to each other, but similar but not congruent, this cannot be attached to each other without leaving a gap. So different kinds of tessellations we have. Some designs of tiles on floor and walls of a room are the following. So ये बच्चों देखो यहाँ पे गैप नहीं है ना बिल्कुल भी, दोनों ट्राइंगल्स के बीच में कोई भी गैप हमारा नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड योर टेसिलेशन. ओके, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 13C. टेल वेदर द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर. सो ये सेम ही मुझे लग रहा है एग्जैक्टली, अगर मैं इसे थोड़ा सा मूव कर देती हूँ तो ये सेम साइज का हो जाएगा. सो ये आपका कॉन्ग्रुएंट है. यहाँ पर ये आपका सिमिलर है क्योंकि इनका जो साइज है वो सेम नहीं है. यहाँ पर हमारा, या आप बताओगे बच्चों सी एंड डी पार्ट में कि कॉन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है. कंप्लीट द पैटर्न्स बाय यूजिंग टाइल. तो आपको यहाँ पर ये पैटर्न कंप्लीट करना है. तो सेकेंड पैटर्न आपका क्या होगा कि आप इसको फुल कंप्लीट कर दोगे और उसके बाद ये, तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर टेसिलेशन पार्ट. After this you have miscellaneous questions. It means the combination of questions you have which you already do in your above section, in examples, in exercise. Okay, after that you have to do your multiple choice of question, brainstorming session, mental maths questions. Okay, by doing that this is the end of your chapter. I hope so it is clear to you and you understood this chapter very well. So students, this is the end of your chapter as well as end of your syllabus. अब आपको क्या करना है कि आपको खुद को इवेल्युएट करना है, और इवेल्युएट करने के बाद जहां जिन जिन चैप्टर्स में आप देखते हो कि आपको थोड़े से फोल्ड डाउन है, तो आप क्या करोगे, आप उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा समझोगे, इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और फिर दोबारा से खुद को इवेल्युएट करोगे. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी हायर क्लासेस में. टिल दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एंजॉय योर डे, बट विद दैट you also have to start your preparation for the exam. So students, bye bye, have a good day.